Hello and welcome to Prowings CS. How you all are doing? This time company law का paper chapters 8 to 14 from the module वो लिए गए थे and overall performances कैसे थी क्वेश्चन वाइज ही देख लेते क्या क्या चीजें थी. काफी अच्छा पेपर था. I would say reasonably काफी अच्छा पेपर था and actually the performance that was expected and the performance जो मिलनी चाहिए थी. You can see the differences in your answers when you are attempting the question itself. आप देख सकते हो. तो यहाँ पे इस पेपर के हिसाब से क्या क्या था. इस बार हमने चैप्टर कवर किए थे कंपनी लॉ के 8 to 14. और ये एक चीज ऑब्जर्व की हुई है कि जैसे स्टूडेंट्स जो पीछे के चैप्टर्स की तरफ आता है, जैसे 8 to 14 की तरफ, कहीं ना कहीं उसका डिसइंटरेस्ट हो जाता है. कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग के चैप्टर्स की तरफ आपको जो भी पढ़ाने वाले हैं या जो भी आपने पढ़ा है उसकी तरफ ज्यादा फोकस रहे हो. पीछे के चैप्टर्स में आप डिसइंटरेस्टेड हो, काफी सारे टॉपिक्स छोड़ चुके हो, ऊपर ऊपर से रीडिंग की हुई है जिसका नतीजा आपके आंसर्स में दिखता है. तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना. हो सके तो एटलीस्ट आपने जितना भी कंटेंट यहाँ पे बताया गया है उतना तो अच्छे से पढ़ के जाओ इन चैप्टर से, उसमें तो कॉम्प्रोमाइज मत करो. ठीक है, तो ठीक है, चलो ओवरऑल ये पेपर कैसे गया, लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड दैट. ओवरऑल पेपर अच्छा था. लेट्स सी, पहला क्वेश्चन ही क्या था. मिस्टर एक्स, नहीं सॉरी, एक्स लिमिटेड है. तो एक्स लिमिटेड इज अ होली ओन सब्सिडरी. देखो जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ने का, थोड़ा स्लोली पढ़ने का. पेंसिल चाहिए तो ड्रॉ कर लेना कि एक्स लिमिटेड है. एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड की होली ओन सब्सिडरी है. ठीक है, 31 मार्च 2020 को एक्स लिमिटेड जो होली ओन सब्सिडरी है दैट ओन 60% इन ए लिमिटेड. ओके, एक्स लिमिटेड ए लिमिटेड का 60 एंड 26% इन बी लिमिटेड. ओ, तो बी लिमिटेड एक्स लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी और एक्स लिमिटेड ए लिमिटेड का होल्डिंग कंपनी हो गया. वेरी गुड. तो वाई लिमिटेड हैज टोटल 8 शेयर होल्डर. अच्छा, ये भी क्लियर कर दिया कि टोटल मिला के उनके पास 8 शेयर होल्डर्स ही है. एंड वाई लिमिटेड मतलब अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी. तो वाई लिमिटेड हैज फाइल्ड कंसोलिडेटेड अकाउंट्स ऑफ ऑल द सब्सिडरीज इन अकॉर्डिंग विद शेड्यूल 3 ऑफ द एक्ट एंड द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, एडवाइज द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड जो होली ओन सब्सिडरी either they are required to consolidate accounts of A limited or B limited or not while presenting. Okay, क्वेश्चन अच्छा है, क्लियर. तो अब आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है. मतलब हमको कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स के रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन था कि क्या एक होल्डी ओन सब्सिडरी को कंसोलिडेशन करना पड़ेगा जबकि उसकी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ने पूरा कंसोलिडेशन कर लिया है. ठीक है, तो जिसको क्लिक हुआ था अच्छी बात है, नहीं हुआ तो चलो अभी आंसर देख लेते हैं क्या क्या हुआ था. क्लियर. तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको समझनी थी. As per section 129 subsection 3, company which has one or more subsidiary or associate company, they have to prepare consolidated financial statement as per the provisions of schedule 3 के हिसाब से. Proviso to rule 6 बोलता है of the company account rules that consolidation is not required in certain circumstances. क्या था. The company is a wholly owned subsidiary or partly owned subsidiary of another company and all the members have been informed in writing about the company is not presenting a financial statement and the company is lost in listing or listing process also, and the ultimate holding company or any of the intermediate holding company, they have filed consolidated financial statement with the registrar where compliant with the applicable standards. Okay, तो अगर ये सिचुएशन सेटिस्फाइड है तो होली ओन सब्सिडरी को फाइल करने की जरूरत नहीं थी. So as a result, X Limited, it is the wholly owned subsidiary of Y Limited. Y Limited has filed consolidated accounts with ROC in compliance with the rules. A Limited is a subsidiary of X Limited. B Limited is an associate company of X Limited. Therefore, in accordance with the second proviso to the Rule 6 of the Company Account Rules 2014, X Limited is not required to consolidate the accounts of A Limited and B Limited if Y Limited has intimated in writing to X Limited for not preparing the consolidated financial statement, okay, provided the proof of delivery of intimation has been maintained with the X Limited. As simple as this. Clear? Fine. So that was one of the questions that you could have answered. Next question was that you have to draft a resolution confirming the remuneration of the cost auditors, stating the authority, type of resolution and relevant provisions. And the students were like, ऐसे इसके रिएक्शंस देखने थे, सर ये क्या रेजोल्यूशन कौन सा बनाने का है. अच्छा देखो, यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी यानी शेयर होल्डर्स होगा क्योंकि ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है. और टाइप ऑफ रेजोल्यूशन जो है वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग में पास होगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन.
ठीक है, तो हर जगह स्पेशल रेजोल्यूशन ठोक के नहीं आने का दैट इज वन ऑफ द ट्रबल विद मेजोरिटी स्टूडेंट्स, जहां मूड होता है स्पेशल रेजोल्यूशन उठा के डाल देते हैं, ठीक है। तो अभी रेजोल्यूशन ड्राफ्टिंग है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स करके स्टार्ट करने का, एंड हम कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं, उसका रेम्यूनरेशन डिसाइड कर रहे हैं, तो रिजॉल्व दैट। फिर सेक्शन याद करने का, पर्सुएंट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 148 other applicable provisions if any of the companies act and the companies ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स था, ओके, कंपनी अकाउंट रूल्स नहीं, तो ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स इंक्लूडिंग स्टैट्यूटरी मॉडिफिकेशंस, रीएनेक्टमेंट्स देयरऑफ फ्रॉम टाइम टू टाइम, कॉमा, द रेम्यूनरेशन ऑफ rupees 2,50,000 plus applicable taxes and out of pocket expenses as recommended by the audit committee and approved by the board of directors of the company, comma, payable to Messrs ABC Associate cost account firm registration name as cost account। और हाँ, एग्जाम में अपना नाम मत डाल के आना या किसी का भी नाम, ABC XYZ ऐसे वर्ड्स यूज किया करो, ओके। तो as a cost auditor to conduct the audit of the relevant records for the company for the financial year 1920 as on 31st March 20 be and hereby ratified and confirmed। फिर आगे का रेजोल्यूशन डायरेक्टर फाइलिंग की पावर देनी पड़ेगी, तो resolve further that Mr. X, the director of the company, be and hereby authorized to do all acts, deeds, things, including filings, as may be required to take necessary steps deemed to be proper, expedient, and to give effect to the resolution method date, double inverted comma close and full stop। क्लियर? अब समझ में आया, रेजोल्यूशन ड्राफ्टिंग एज सच कोई टफ नहीं था, बट कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन मिस कर गई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो होप आपने समझ लिया कि किस तरीके से इसको पुट अप करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा था वो सिंपली इतना ही था कि एनुअल रिटर्न्स के ऊपर का क्वेश्चन था, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एनुअल रिटर्न, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, हु हैज टू साइन द एनुअल रिटर्न्स, उसके सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, एंड एनुअल रिटर्न्स रजिस्ट्रार के साथ कब फाइल किया जाता है। मतलब एनुअल रिटर्न के बारे में ले लेके सब कुछ पूछने की कोशिश की गई थी, ठीक है। चलो, एनुअल रिटर्न्स की एप्लीकेबिलिटी पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो एज पर सेक्शन 92 of the Companies Act, every company is required to prepare annual return in the form MGT7. Okay, they have to contain the particulars as stood at the close of the financial year. Annual return has to be filed with the registrar within 60 days from the AGM, which is actually held or from the last day when the AGM should have been held. Okay, ये फाइलिंग की रिक्वायरमेंट्स हो जाती है। अब आते हैं साइनिंग के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो सेक्शन 92 सबसेक्शन 1 के हिसाब से, where the annual return is required to be signed both by the director and the company secretary, and where there is no company secretary, by the company secretary in practice. An annual return of one-person company or a small company has to be signed by the company secretary, or where there is no company secretary, then by the director of the company. The Act authorizes the central government to prescribe an abridged form of annual return for one-person company, small companies, other class of companies. Okay, so that is what has been given for signing। और certifications के लिए specially पूछा गया था, तो ठीक है, certification बताते हैं। Certification of annual return contained in subsection 2 of section 92 and read with rule 11 of companies management administration rule। Annual return of a listed company or annual return of a paid up share capital of a company with a 10 crore or more or turnover of 50 crore or more has to be certified by a company secretary in practice। कौन से फॉर्म में? Form MGT8, and the certificate shall state the annual return discloses the facts correctly, adequately, and the company has complied with the provisions of the Act। Okay, clear? And fourthly पूछा था फाइलिंग विद रजिस्टर, दो नो डाउट थोड़ा बहुत ऊपर डिस्कस किया था, बट स्पेसिफिकली पूछा था हमको लिखना है कि एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल विद रजिस्टर अ कॉपी ऑफ एनुअल रिटर्न। कितने टाइम में? विद इन 60 days from the date on which the AGM is held, or where no AGM is held in any year within 60 days from the date when the AGM should have been held, with a statement specifying the reasons for not holding the AGM in MGT7 and with such fees and additional fees as may be prescribed। Yeah, so that becomes the answer of annual returns filing and annual returns की क्या-क्या requirements थी। ठीक है, समझा? Fine, next question आया था, that was explaining the provision of signing of board report। Okay, काफी स्टूडेंट्स को ये प्रोविजन साइनिंग काफी अच्छे से आता था, तो आई वाज हैप्पी अबाउट एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो काफी अच्छे से लिख पाए थे। तो साइनिंग का बोर्ड रिपोर्ट सेक्शन 134 सबसेक्शन 6 के हिसाब से है। 134 4 छापने की जरूरत नहीं थी, 134 सबसेक्शन 6 के हिसाब से। क्लियर? चलो देख लेते हैं 134 के हिसाब से क्या था। सो बोर्ड रिपोर्ट एंड एनी एनेक्स्चर्स देयर टू अंडर सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 के हिसाब से हैज टू बी साइन्ड बाय द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी if he is authorized by the board, and where he is not so authorized,
it has to be signed by at least 2 directors, one of whom shall be the managing director, or by the director where there is one director. Now, where the chairperson is authorized by the board, then the chairperson has to sign, and where the chairperson is not authorized by the board, at least 2 directors, one of them has to be a managing director or a director where there is one. Okay, clear? समझा? ठीक है ना? तो इस तरीके से एनुअल रिपोर्ट्स हैज टू बी साइन। एंड लास्टली हम लोग ये बोल सकते हैं कि एज पर SS4 के हिसाब से, दैट इज एज पर SS4, annexes to the board report shall be signed in the similar manner as the board expect that report of CSR activities which is required to be signed by the chief executive officer or the managing director or any other director of the company and the chairperson of the CSR committee. Clear? So यहाँ पे SS4 के हिसाब से even the annexures has to be signed in the similar manner except that CSR report of the companies. Okay? तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि साइन कौन कर सकता है. Okay? SS4 की रिक्वायरमेंट्स कुछ जन भूल गए थे, बट ठीक है, चलो that is fine. And then we are coming to the third question. Okay? Let's see. Cautious Limited, unlisted company with the 1200 shareholders, they proposes to extend loans and to make investment in excess of the limits prescribed in section 186 subsection 3. As a part of the compliance requirements, the company is required to pass a special resolution. You have to advise the company if a polling by show of hands is required or a poll is required. Quite an interesting question. आपको ये बताना था कि कौन सा पोल चाहिए, शो ऑफ हैंड्स वाला कि पोल वाला. ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए आपको रादर 186 से ज्यादा ये बताना था कि कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स के हिसाब से पोलिंग कौन सा होगा. अच्छा, टोटल यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डर्स है और 1200 शेयर होल्डर्स है, जिससे एक हिंट तो मिल ही जाता है. ठीक है, चलो आओ सेक्शन 20 रूल 26 टू सब रूल 16 देखते हैं. तो कंपनीज मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स के हिसाब से इट इज मैंडेटरी फॉर द कंपनी विच हैज मोर देन 200 मेंबर्स to transact the business by authorizing the provisions of loans or guarantees which is in excess of the limit under section 186 subsection 3 only through postal ballot and not by show of hands. Rule 20 regarding the voting by electronic means shall apply as far as applicable mutatis mutandis to the postal ballots also in respect of voting by electronic means. कहने का मतलब ये है कि जब 200 से ज्यादा मेंबर्स होते हैं तो वहां पे हम लोग पोस्टल बैलेट एक्सरसाइज करते हैं और वहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है तो इलेक्ट्रॉनिक रूल्स suitably changes के साथ एप्लीकेबल होते हैं. So under the given circumstances, it is mandatory for the Cautious Limited, being an unlisted company with 1200 members, to conduct a poll and electronic means to approve the lending process. तो ये बताने की जरूरत थी कि yes, they can go by poll, rather they can, being an unlisted company with 1200 members, they can conduct the poll and electronic means and approve the lending process. That is, electronic means से वो लोग पोलिंग कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर? तो मोर देन 200 मेंबर्स था, सफिशिएंट हिंट था एंड आंसर्स देखा आपने. ठीक है, अब यहाँ पे 186 एक और क्वेश्चन जो हमेशा से फेवरेट रहा है, 60% और वो वाला. So Board of Directors ABC Limited, okay, they have agreed in principle to grant loan of 6 crores to XYZ Limited. तो ABC Limited ने XYZ Limited को लोन देने की बात की. ठीक है, ABC Limited has following information. उनका authorized capital 15 crores है, paid up capital 10 crores था, free reserve 4 crores का है, security premiums 1 crore का है. Clear? फिर आगे information देते हैं कि ABC has already given loan of 3 crores to another company, namely PQR, and has made an investment of 2 crores in shares of other company. What advice will you give to the board of the ABC Limited about the proposed loan to XYZ in the light of the provisions of Companies Act? ठीक है, तो यहाँ पे हम 186 subsection 2 को हाईलाइट करते हुए उसे प्रोविजन से पहले डिस्कशन शुरू करते हैं. हम लिखते हैं कि 186 subsection 2 के हिसाब से it provides that no company shall directly or indirectly A. give any loan to any person or any body corporate, B. give any guarantee or provide any security in connection with loan to any body corporate or a person, and C. acquire any by way of subscription, purchase or otherwise security of the body corporate exceeding 60% of the paid up capital, free reserve, security premium account or 100% of the free reserves and security premium account, whichever is more. बराबर, ये आपने लिमिट्स पहले बता दी. फिर 186 सबसेक्शन 3 के हिसाब से अब बाकी प्रोविजन डिस्कस करना शुरू करते हो. 186 सबसेक्शन 3 के हिसाब से
where the aggregate of the loan and the investment so far made and the amount for which the guarantee of security so far has been provided, or in all other body corporates, along with the investments, loans, or guarantee of security which is proposed to be made or given by the board, exceeds the limit under section 186 subsection 2, then no investment shall be made, or no guarantee shall be given, or no security shall be provided, unless previously authorized special resolution has been passed in general meeting. तो आपने ये बता दिया कि कब स्पेशल रेजोल्यूशंस की जरूरत होती है 186 सबसेक्शन 3 के हिसाब से. क्लियर? एंड देन फाइनली अब इस क्वेश्चन के एनालिसिस पे. So in view of the above provisions, it is to determine whether the special resolution is required to pass in the general meeting before granting 6 crores to XYZ. Now 186(2) के हिसाब से the limit for loans and investments will be the amount whichever is more of the following. तो क्या following है? तो पहले कैलकुलेशन के हिसाब से 60% of the paid up capital plus free reserves plus security premium is coming to 9 crores and 100% of the free reserves and security is 5 crores. Hence, the limit is 9 crores so far as loan and investments made or to be made. Since the company has already made loan of 3 crores, investment of 2 crores in the shares of the other companies and further agreed to for a loan of 6 crores, yes, XYZ Limited exceeds a limit of 9 crores. Hence, a prior approval by special resolution in the general meeting is required to be passed. तो आपसे एडवाइस पूछी थी और ये स्वीट एडवाइस. क्लियर? लास्ट में आप भूल गए MGD 14 सबका फेवरेट. तो सेक्शन 117 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए के हिसाब से द स्पेशल रेजोल्यूशन सो पास बाय ABC shall be required to be filed with MCA in e-form MGD 14 within 30 days of passing special resolution. Yes. So that was one of the answers that you have to give. And what are the provisions of SEBI LODR, that is SEBI Listing Obligation Disclosure Requirement for Preservation of Registers and Records? इसको देख के मुझे लगता है स्टूडेंट्स ने काफी हद तक ये सोचा था, क्योंकि किसी ने नहीं लिखा था ये आंसर, तो ये सोचा था, पता नहीं लगता है सर ने सेबी के अंदर से कहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया था. ये सेबी के अंदर नहीं है, ये क्वेश्चन वेरी वेल आपके मॉड्यूल का दिया हुआ क्वेश्चन है, चैप्टर ऑफ रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स का. ठीक है, तो आपसे प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स के अंदर सेबी के क्या प्रोविजन है वो पूछे गए थे. क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे लिखना था कि इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, बिकॉज सभी एलओडीआर लिस्टेड कंपनी को लगता है, that requires policies to be adopted by the companies for the purpose of preserving the documents. आप बोल सकते हैं पॉलिसी फॉर preservation of documents क्या था? Regulation 9 of SEBI LODR provides for preservation of documents. The listed entity shall have a policy for preservation of documents approved by its board of directors, classifying in 2 categories: documents which shall be preserved in permanent nature and documents where the preservation is not less than 8 years after the completion of the relevant transactions. Clear? And provided that the listed entity may keep the documents classified in clause A or B in the electronic mode also. तो ये हो गया सभी का प्रोविजन. और जो पुराने डॉक्यूमेंट्स जिसको अर्काइवल पॉलिसीज भी बोलते हैं, तो अर्काइवल पॉलिसीज के हिसाब से क्या क्या चीजें ध्यान रखनी थी? सो एज पर रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी LODR provides for disclosure of material events or any kind of information which shall be disclosed with or without any application to the guidelines for materiality. Okay, and as per this regulation 30, every listed entity shall disclose on its website and such events and information as provided in regulation 30, and such disclosure has to be made on the website for a minimum period of 5 years thereafter as per the archival policy as disclosed. तो हमारे पास पुराने डॉक्यूमेंट्स क्या थे, क्या रजिस्टर्स थे, क्या डिस्ट्रॉय किए गए, ये सारी चीजें कंपनी के वेबसाइट पे भी आ सकती है. दैट इज एज पर द आर्काइवल पॉलिसी ऑफ द रेगुलेशन 30 के हिसाब से. क्लियर? सबको समझा? ओके, अब इसमें समझना क्या था सब छोड़ के आगे. अगेन फॉर्म फाइलिंग का क्वेश्चन और सबको लगा सर ये तो कौन से फॉर्म्स हैं, ये रजिस्टर्स पूछे गए थे. व्हाट आर द पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्टर्स इन द फॉलोइंग फॉर्म? यानी SH2 कौन सा रजिस्टर है, MGT1 कौन सा रजिस्टर है, MBP3 कौन सा रजिस्टर है, ये पूछा गया था. और अच्छा खासा कंफ्यूजन करके आए हो, तो ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना. अब SH2 के बारे में बात करो तो इट्स अ रजिस्टर ऑफ रिन्यूड एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का रजिस्टर है. ओके, तो यहाँ पे एंट्री शुड इंडिकेट द नेम ऑफ द पर्सन टू हुम द सर्टिफिकेट इज इशूड, the number and the date of issue of the share certificate in view of which new certificate has been issued, and the necessary changes indicated in the register of members by suitable cross references to the remarks column. And entries made should be authenticated by the company secretary of the company or such person who is authorized by the board by sealing and signing the share certificates. MGT1 की बात करो, we are talking about
of members, famous register of members, exactly. The MGT1 register of members, and every company has to maintain the register of members, indicating separately the class of equity and the preference shares, which is held by each member resident in or outside India. It has to be authenticated by the company secretary or by any of the directors authorized by the board, and the date of the board resolution authorizing has to be mentioned. A third वाला था MBP3, that is called Register of Investments not held in its own name. ओ कई लोग हाँ कर रहे हैं, अभी याद आ रहा है, ठीक है. The MBP3, any shares or security in which the investments have been made by the company are not held in its own name. The company has to maintain a register which shall contain the particulars as prescribed. The entries in the register has to be authenticated by the company secretary of the company or by any other person, okay, of the board. तो ये हो गया सिंपल, आपने बताना था रजिस्टर और उसका क्यों क्या पर्पस था, ये उसका पर्पस था, ठीक है. Fine. The next question that we have to answer was question number 5A. Write the note on the tribunal's power of, that is the power of the tribunal to enforce compromise. Please note, ये question enforcement of compromise and arrangement के ऊपर था, न कि compromise and arrangement को पास करने के ऊपर. कई लोगों ने section 230 की भर के जो दिमाग में आता है लिख के आ गए थे, लेकिन वो पूछा ही नहीं था. 230 ऑलरेडी पास हो चुका है, सेक्शन 230 कंप्लाइड हो चुका है. अब इसका एनफोर्समेंट कैसे हो, क्या कोर्ट उसको एनफोर्स कर पाता है कि नहीं कर पाता, उसके बाद थी. तो सेक्शन 231 था. तो एक्चुअली सेक्शन 231 के हिसाब से क्या प्रोविजन था कि ट्रिब्यूनल मेक्स एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 230 सैंक्शनिंग अ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी. It has the power to supervise the implementation of compromise and arrangement. It may, at the time of making such an order or at the time thereafter, give such directions in regard to any matter or make such modification in the compromise and arrangement as it considered necessary for the proper implementation of compromise and arrangement. Okay? And subsection 2 states that if the tribunal is satisfied that the compromise and arrangement jo hua hai cannot be implemented satisfactorily without modifications, then the company is unable to pay, the company is still unable to pay its debts as per the scheme. Then it may order a winding up of a company, and such order shall be deemed to be a order as per 273. तो ये भी एक जोरदार पावर होती है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट के अंदर, ठीक है. तो इतना सा पॉइंट अपने को डिस्कस करना. अब आता हूँ क्वेश्चन 5B के ऊपर. तो क्वेश्चन 5B का सिंपल क्वेश्चन था, as per companies act who shall conduct the valuation of property and stocks and security and other assets of the company. तो किसकी बात हो रही थी, रजिस्टर्ड वैल्यूअर की. पढ़ा है क्वेश्चन, फिर भी ऐसे ऐसे मतलब डाउटफुल चीजें, इसलिए मैं बोला पीछे के चैप्टर्स ऐसे लगते थे जैसे कई स्टूडेंट्स ने डाउटफुल नेचर में छोड़ के आए. तो हु शैल कंडक्ट द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी. और प्लीज उल्टा सीधा मत लिखा करो चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 10 years ऑफ प्रैक्टिस और मर्चेंट बैंकर, ये कहाँ से आया, कौन से सेक्शन का आंसर कर रहे हो, ठीक है. तो आपको कंपनीज एक्ट के हिसाब से वैल्यूएशन का पॉइंट पूछा गया, तो 247 के हिसाब से आंसर लिखना था. तो वैल्यूएशन के प्रोविजंस के हिसाब से where a valuation is required to be made in respect to property, stocks, debentures, security, goodwill, or any other assets or net worth of the company, liabilities, or any of the provisions of the Companies Act, it has to be valued by a person who has a qualification and experience as a registered valuer and on such terms and conditions as prescribed and appointed by the audit committee or in the absence of the board of the company. And the valuer appointed under the subsection 1 shall make an impartial, true and fair valuation of the assets, okay, which may be required to be valued, exercise due diligence while performing the functions as a valuer. He has to make the valuation in accordance with such rules as may be prescribed, and not to undertake the valuation of any assets in which he himself is the director or has indirect interest, or he becomes so interested during the period of 3 years prior to his appointment as a valuer, 3 years after the valuation of the assets. So हमने बता दिया कि valuer valuation करते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखेगा और कौन वैल्यू हो सकता है और नहीं हो सकता. तो बस इतनी सी बात बतानी थी कि वैल्यूएशन कौन कर सकता है. ओके, क्लियर. उसके बाद सिंपल क्वेश्चन था, आपको ई फॉर्म्स बताने थे. ओके, यहाँ पे भी कुछ लोग बता पाए, कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत फंबल कर दिया. तो आपको इतना बताना था कि फॉलोइंग ई फॉर्म्स किस नेचर में यूज किए जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे भी मालूम पड़ता है कि स्टूडेंट्स इस चैप्टर को ऊपर से देख के गए. तो ई फॉर्म INC 18 किस लिए यूज किया है. INC 18 is actually used under section 84, read with 384 of the Companies Act, with read with rule 9. Simple, it is a notice of appointment or cessation of a receiver or manager. INC 18 is used for the application to the regional director
ओके मैं गलत बोल गया, रीजनल डायरेक्टर फॉर कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू एनी अदर काइंड। CNG 6 जो यूज होता है, CNG 6 फॉर्म्स जो होता है, दैट इज द अपॉइंटमेंट एंड सीजेशन ऑफ द रिसीवर, ओके, और द मैनेजर, उसके लिए यूज होता है। क्लियर? देन CRA 4 का फॉर्म जो होता है, CRA फॉर्म 148 सबसेक्शन 6 के हिसाब से यूज होता है। इट इज रेड विद रूल 6 के हिसाब से। इट इज अ फॉर्म फॉर कॉस्ट ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट के लिए यूज होता है। FC 4 फॉर्म जो होता है वो एनुअल रिटर्न ऑफ फॉरेन कंपनी। ठीक है, तो ये सारे फॉर्म देखने के बाद एक चीज समझ में आया, हमको कुछ नहीं आता। तो यही पॉइंट पूरा क्वेश्चन लोगों ने छोड़ के आए हैं। अच्छा, ये शॉर्ट नोट चलो कुछ लोगों ने लिखने की कोशिश की, कुछ ने अच्छा लिखा, बाकी तो ऊपर ऊपर से डिस्कस करके चले गए। सो राइट अ नोट ऑन एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, XBRL के बारे में पूछा गया था। तो क्या नोट लिखना था और क्या लिख के आए हैं, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। XBRL यानी एक ऐसी लैंग्वेज है जहां पे आप HTML फॉर्मेट्स में काफी सारी चीजें कन्वर्ट कर सकते हो। So XBRL is a language of the electronic communication of business and financial data, which is revolutionizing the business reporting around the world. It has in its preparation, analysis, and communication of business information. It offers cost savings, greater efficiency, improved accuracy, reliability of information, and supplying useful and financial data. ये आप लिख सकते थे। Then उसके साथ Ministry of Corporate Affairs has mandated certain class of companies which is below mentioned, for which they have to file an XBRL taxonomy. कौन सी कंपनी थी? All listed companies with the stock exchanges in India and their Indian subsidiaries. All companies which have a paid up capital of 5 crores or more. All companies which have a turnover of 100 crores or more. All companies which are required to prepare financial statement as per Indian accounting standards. Okay. Proviso ये बोलता है that provided that the companies which are preparing the financial statement as per the company's accounting standards, they have to file the statement using the taxonomy which is provided in Annexure 2, and the companies which is preparing the financial statement of the company accounting standards 2015, they have to file the statement as per the taxonomy provided in Annexure 2A. However, the companies in banking, insurance, and non-financial, that is NBFCs, non-banking financial company, and housing finance, they are exempted from XBRL till further orders. ये पॉइंट अपने को लिखना था। ओके, भले आप अनेक्शर वाला नहीं लिख के आते, लेकिन कम से कम एग्जेम्प्टेड कंपनीज तो लिख के आते। ओके, एंड की बेनिफिट्स ऑफ XBRL क्या होगा? तो XBRL relevant data, tags, and selective information are fetched for the specific purpose for various government and regulatory information. In short, government इसको अच्छे से एनालाइज कर पाती है, समझ पाती है। And it is a global reporting standard which helps to improve data mining and information. यानी globally acceptable है, तो काफी हद तक काफी सारे नेशंस इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब आता हूँ यूके कंपनी। ये तो चैप्टर ब्लटनली छोड़ा हुआ चैप्टर था, ग्लोबल तो समझो पढ़ा ही नहीं था, दूर दूर तक देखा ही नहीं होगा सर, ऐसा वाला था। तो स्टेट द यूके प्रोविजंस 2016 फॉर रजिस्टर्स ऑफ सेक्रेटरीज के बारे में पूछा गया था, और क्या लिखा है, लिख के कहा है, जोड़ के तो आए हैं। सो यहाँ पे आंसर आप डिस्कस कर सकते हैं। फॉलोइंग प्रोविजंस कंटेन इन सेक्शन 275 273 ऑफ द यूके's कंपनीज एक्ट। Or duty of the register of secretary. A company has to keep a register of secretary. The register must maintain the required particulars of the person who is a secretary or joint secretary of the company, and the register must be kept available for inspection at the company of the register office, and the company must give a notice to the registrar of the place at which the register is available for inspection and of any of the change that has taken place, unless it has at all the times kept at the registered office, and the register must be kept open for inspection of any of the member of the company without charge, or any other person on payment of such fees as may be prescribed. Clear? Section 276, duty to notify the register of changes whereby a company within 14 days from the person becoming or ceasing to become a company secretary, that is secretary or joint secretaries, or the occurrence of any of the change in the particulars of the register of the secretary, they have to give a notice of the change of the data which has occurred, okay, to the company. And secondly, the notice of the person have becoming a secretary or one of the joint secretary of the company must be accompanied by the consent of that person to act in relevant capacity. And thirdly, if the default has been made in complying with this section, an offense which is committed by every officer of the company who is in default for this purpose, a shadow director is treated as an officer of the company. Okay, and fourthly, a person who is guilty of an offense under the section is liable for a summary conviction to fine not exceeding level 5 on the standard scale for continued contravention on a daily default not exceeding 1/10 of the level 5 of the standard scale. तो वहां पे punishment होती है, and
लेवल दिए गए हैं उसके हिसाब से पनिशमेंट लेवल की जाती है। मतलब इन शॉर्ट, या आप कंपनी सेक्रेटरी के प्रोविजंस के बारे में पूछा गया था लिखने के लिए, एटलीस्ट ऊपर आंसर तो डिस्कस करके आते 275 ड्यूटी मेंटेन रजिस्टर। ओके, कुछ और नहीं तो बेसिक प्रोविजंस तो पढ़ के रखो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ठीक है फाइन, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपको बताए गए थे कि ये सारे पढ़ के जाना। एंड नरेट्स द एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स इन द हांगकांग कंपनीज ऑर्डिनेंस, ये भी छोड़ के आया था। मतलब सर ये सब चैप्टर्स है ना, ये सब ना पढ़ने को नहीं होते, ऐसे बहुत ऐसे ऐसे इरिटेशन होती है अपने को इंडिया का कंपनी लॉ याद नहीं होता सर, तो आई नो स्टूडेंट्स रिमार्क्स है सर हमको तो इंडिया का कंपनी लॉ याद नहीं होता, ये कहाँ के कंपनी लॉ हमको पूछते रहते हैं, ऐसा कोई पूछता है क्या? तो देखो अभी मॉड्यूल में दिया है तो ऐसा पूछते हैं। और अभी कंपनी सेक्रेटरी ग्लोबल क्लॉज हो चुका है तो ग्लोबल लॉ भी याद किया करो थोड़ा बहुत, ठीक है? इसलिए मैंने आपको बोले थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको डिस्कस किए गए थे एटलीस्ट वो याद रखा करो, और ये सारे क्वेश्चन उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से थे। The following are the eligible conditions for appointment of the auditor under the Hong Kong Company Ordinance. Only a practice unit is eligible for appointment of the auditors and followings are disqualified for appointment. तो ऑडिटर कौन बन सकता था हांगकांग कंपनी ऑर्डिनेंस के हिसाब से, वो सारी चीजें ध्यान रखो। A person who is an officer or employee of the company, a person who is a partner or an employee of the person, a person who is by virtue of any A or B disqualified for appointment of the auditor for any undertaking that is a subsidiary undertaking or a parent of the company और अंडरटेकिंग, मतलब काफी हद तक ये प्रोविजंस है ना अपने कंपनी लॉ की तरह ही है। ऑफिसर्स अपॉइंटमेंट डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीजर्स एंड ऑडिटर मस्ट बी अपॉइंटेड इन ईच फाइनेंशियल ईयर। हाँ वहाँ पे ये ऐसा है कि अपने उधर 5 years का क्लॉज होता है, वहाँ पे ईच फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम करके आ गया, और आई एवरी स्टूडेंट्स विल लास्ट बी हैप्पी बिकॉज ओवरऑल पेपर देखने के बाद मैंने ये देखा कि कुछ लिख पाए कुछ नहीं लिख पाए। मैं इतना बोलूंगा कि जो पीछे के चैप्टर्स है एटलीस्ट उसमें थोड़ा ध्यान दो, आप ज्यादा नहीं तो कम से कम ये समझो कि उसके सारे एक बार ओवरऑल मॉड्यूल का सिनेरियो देखो, समझो कि इसमें क्या क्या चीजें आती है, कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं, ये कौन से टॉपिक्स चैप्टर्स में कवर होते हैं, क्या क्या चीजें आपको एक आध बार देखनी है। कम से कम एटलीस्ट चैप्टर्स के पीछे दिए हुए क्वेश्चंस, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन उतना तो पढ़ के जाओ। जो पीछे के चैप्टर्स है समथिंग लाइक 13 एंड 14, आप 11, ये जो ऐसे मतलब ऐसे चैप्टर्स आप छोड़ के जा रहे हो, लिटरली छोड़ के जा रहे हो। इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि आपका पेपर 50% यानी 1 to 7 पे आप पूरी तरह डिपेंड हो रहे हो, लेकिन 8 to 14 पे आप डिपेंड नहीं हो रहे, तो आपका आधा पेपर एकदम वॉलेटाइल है। इट कैन बी अफेक्टिंग एंटायर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशंस। तो प्लीज ये प्रैक्टिस मत कर देना कि आप आधे का आधा पूरा पेपर ही छोड़ के चले जाओ, तो इसका इम्पैक्ट आपके एग्जामिनेशन पे बहुत भारी पड़ सकता है। ओके, बिकॉज वी कैनॉट ट्रस्ट द एग्जामिनर के एग्जामिनर हमेशा ऊपर वाले से पूछेगा, ही कैन बी आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द लैटर हाफ एंड सडनली इट कुड बी अ ब्लास्टर फॉर यू। और कंपनी लॉ का पेपर जनरली ब्लास्टर होता है क्योंकि वो कंप्लीट ही नहीं होता है ठीक है, तो प्लीज अपनी तरफ से स्टडीज करो, अच्छे से करो, दिल से करो, एंड आई एम श्योर दैट यू विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन दिस टाइम। Hats off for all your hard work and be in touch. More papers are coming. Thank you. Bye bye.